Yes, ma'am. In previous lecture. Okay, students, we have discussed about energy band diagram in previous lecture. Now we have three types of materials in a solid state physics. They are insulators, conductors, and semiconductors. Now, any one of you can explain the energy band diagram of insulator? Please raise your hand. How many of you can describe? Yes. I'm waiting for your response, friends. Can you describe the energy band diagram of insulator? And first, what is insulator? Yes, Aditya. Shishant. Sonali. Yes, ma'am. Yes. Can you explain this energy band diagram for insulators? First of all, what do you mean by insulator? मैम इंसुलेटर जो है वो बैड कंडक्टर है एनर्जी का और बैड बैड कंडक्टर मैम Bad conductor of electricity. Okay. That means poor conduction is there. Or we can say no conductivity. No conduction means no movement of electrons. तो क्या होएगा इसमें? There exists a large forbidden energy gap in between the conduction band and in valence band. This one is your valence band. This is conduction band. So there exists a large energy gap between these two, conduction and valence band. और ये वैल्यू कितनी थी? That is approximately equal to 4 to 6 electron volt, or we can say 4 to 7 electron volt. So it's impossible. Practically, it's impossible for an electron to move from the valence band to conduction band. क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है. Is that clear, students? जिन्होंने लेक्चर नहीं लगाया था कल, क्लियर है सबको? इंसुलेटर, मनप्रीत एंड सिमरन. मैम दोबारा बताना एक बार. इंसुलेटर क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. अब हमने क्या करना है? बेसिकली अब पर्पस इज टू मूव और जंप द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे. अब इंसुलेटर क्या है? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर? एनी एग्जांपल? रबर. यस. अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं करेंगे. व्हाई? बिकॉज इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नो कंडक्शन इज देयर, नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर. दैट मींस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे. व्हाई? बिकॉज ये जो इनमें गैप है that is high, और वो गैप कितना है? approximately equal to 4 to 7 electron volt, or we can say it's approximately 6 electron volt. Now second one is conductor. कौन explain करेगा? Conductor is a good conductor of electricity. Yes. Yes. You can unmute yourself. Energy band diagram of conductor. Any one of you. No? किसी को नहीं आता? Yes, Rajinder. मैम इसमें आपने बताया था कि इसमें ना जो गैप होता है वो नहीं होता है कि ये इक्वल हो जाते हैं. Conductor क्या है? It's a good conductor of electricity. Means a material having large number of electrons or large number of free electrons that can conduct very easily, that can move from one state to another very easily.
क्यों? क्योंकि इसमें एक से लार्ज नंबर ऑफ लार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कंडक्टर लाइक कॉपर, metals, copper होगी, aluminium होगी. So there is no forbidden gap between the valence band and conduction band. क्यों? क्योंकि ये overlap कर जाते हैं like this. ये आपका कंडक्शन बैंड है. This one is valence band. अब इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते हैं. Now no energy gap is there. That is called forbidden gap is zero. That is Eg is zero. So it's a energy band diagram of conductor. So you can see here there is an overlapping, that is overlapping. Valence band और conduction band यहाँ पे overlap कर रहे हैं. The two bands overlap. Even at ordinary temperature, मैं बोलूँ अगर 0 Kelvin temperature है और we can say 270 degree Celsius temperature है, a large number of electrons are available for conduction, and without any additional energy, such metals contain a large number of free electrons. That's why it is called as good conductors. So ये आपका हो गया conductors. Now third one is semiconductors. Yes, any one of you? मैम इसमें एनर्जी गैप कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं. Semiconductors, first of all, semiconductors क्या है? Semiconductors which are neither insulators nor conductor. ना तो वो insulator है ना conductor है. That means semiconductor की जो conductivity है, that is more than insulator but less than conductor. इंसुलेटर से ज्यादा कंडक्टिविटी करेगा. दैट मींस इंसुलेटर में गैप ज्यादा था तो इसमें कम होएगा, बट कंडक्टर में कोई गैप नहीं था बट इसमें अब गैप होएगा, बट इट्स मिनिमम. दैट मींस द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन सच मटेरियल इज वेरी नैरो. बहुत कम होता है. और वो कितना है? दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यू कैन नोट डाउन. So in such materials, the energy provided by the heat, light or any radiation at room temperature is sufficient to jump the electron from one state to another, means from valence band to conduction band. आपके electrons easily move कर सकते हैं. So all the electrons of semiconductor materials find themselves locked in the valence band. Hence at 0 Kelvin, semiconductor materials behave as perfect insulator. 0 Kelvin temperature पे means 270 डिग्री सेल्सियस पे जो आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है. जब ये टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, हमने कुछ रेडिएशन प्रोवाइड करी, लाइट या हीट, तो वो क्या करेगा? एक्ट एज एन कंडक्टर. So ये ना तो insulator है ना conductor है. In between, lies between the insulator and conductors. So here energy gap is very less. Now any question on this? अब clear है सभी को? Students please respond say yes or no. Yes, ma'am. हाँ जी, बाकी. Okay, Rajinder. Yes, Amrajit. Simran. Yes, ma'am. Okay. Now next, that is the theory related to your energy band diagram. In the case of conductor, conductor means example is metal. In this case, practically energy gap is zero. Why? Because both the bands overlap. दोनों bands overlap हो रहे थे तो उसमें conductivity ज्यादा थी तो energy gap zero हो गया था approximately. Second one is your insulator. Insulator में जो आपका gap था ये रहा 3 to 6 electron volt और 4 to 7 electron volt. You can note down the value. Energy gap in insulator is large, so it prevents this change in energy by the electrons. So therefore insulators are
poor conductors. And what are the examples? Rubber, wood, paper, quartz. These are example of insulators. Third one is semiconductor, lies between insulator and conductors. And energy gap कितना है? Approximately less than insulators, but more than conductors, and it's approximately lies between 0.1 electron volt to 1 electron volt. This is forbidden energy gap between the valence band and conduction band. You can also note the point here, even the thermal energy like heat, light, radiations at room temperature is enough to jump the electrons from one state to another. So very small gap is there for energy, forbidden energy. So very little energy is required to transfer the electrons. That is the case of silicon semiconductor. And what are the examples of semiconductor? Silicon, germanium, arsenic. These are the examples of semiconductor materials. Now, if any question up to this point, then you can ask me. Done? No question? मैम वो जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वैलेंस बैंड से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो मैम वो यस मैम तो मैम अगर हमें वापस चाहिए होते हैं अगर चाहिए हो तो वैलेंस बैंड में वापस आ सकते हैं? यस, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जंप करता है वो वहां पे स्टे नहीं करता लॉन्ग टाइम के लिए. अगेन इट्स फॉल बैक्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट और ओरिजिनल पोजीशन, बट अगेन वी रिक्वायर सम एनर्जी. External energy is required in the form of light, heat, or any radiation. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now next one is your group 4 materials. Now you can see this diagram here. That is third group, it's fourth one, and this one is fifth group. Any one of you can explain it? These are the semiconductor materials lies between these groups. This is third, fourth, and fifth. That is your periodic table. आप लोगों ने पढ़ा होगा in chemistry periodic table. I'm right or not? Yes, ma'am. Okay. अब इसमें देखो क्या है. The various elements are arranged according to the number of valence electrons. इस periodic table में वे सारे एलिमेंट्स क्या है? अरेंज्ड है. बट कैसे? अकॉर्डिंग टू योर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल. अब एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे हम बोलते हैं टेट्रावेलेंट एलिमेंट्स. जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे बोलते हैं टेट्रावेलेंट एलिमेंट्स. और वो कौन से हैं? that are group 4 elements or group 4 materials. You can note down the point here. Tetravalent elements having 4 valence electrons. Done? Yes, please respond, say yes or no. Yes, ma'am. Yes, Okay. And these are called as semiconductor materials. और semiconductor materials की example क्या है? Silicon, germanium. अब सेकेंड है ऐसे मटेरियल हैविंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दैट आर कॉल्ड एज ट्राइवेलेंट. ट्राइवेलेंट 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब वो कौन से हैं? यस, एनी वन ऑफ यू. और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप 3. और उसमें कौन कौन से आ रहे हैं आपके? बोरॉन, गैलियम और भी आ सकते हैं.
इज दैट क्लियर? इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें इस ग्रुप में, इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट इज कॉल्ड एज ट्राइवेलेंट, एंड 4 के लिए टेट्रावेलेंट. Now next group is, so some materials are there having 5 valence electrons और उसको बोलते हैं pentavalent, जिसमें 5 valence electrons होते हैं. Pentavalent. That is a description of materials in a particular group. हमने 3 ग्रुप पढ़े, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5. सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बात करें, that is group 4 materials, and examples of that is silicon and germanium. अब हम पेंटावेलेंट की बात कर रहे थे जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. उसमें एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड. Is that clear? Have you noted all? Yes, ma'am. Rest all students, please note down on your notebook. Yes, ma'am. Okay. Yes, आप ma'am. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं कोई भी, तो आप उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं. और इट्स अ 2 मार्क्स क्वेश्चन. व्हाट आर ग्रुप 4 मटेरियल्स? तो ग्रुप 4 कौन से? सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. उसकी एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. नाउ नेक्स्ट वन इज, we have 2 types of semiconductor materials. Please wait. One is intrinsic, second is extrinsic. Intrinsic means, yes, any one of you can tell me. Hanji. Have you heard about these 2 types? सुना है ये पहले कि मैं फर्स्ट टाइम ही बोल रही हूँ? इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. Please reply, say yes or no. सुना है मैम. मैम सुना है? ओके. इंट्रिंसिक कौन से होते हैं? Semiconductor material is referred to as intrinsic material, pure semiconductors having very high purity level, जिसमें purity level बहुत ज्यादा होता है. Extrinsic means impure semiconductor materials, जिसे हम बोलते हैं कुछ impurity add कर दी. Impurity add करना उसको क्या बोलते हैं? Any one of you? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग. Doping. Yes. Extrinsic material 2 types की होती है, N type और P type. In next lecture we will discuss it in detail. अब हम back आते हैं. First one is your properties of intrinsic material. Intrinsic means semiconductor materials की very first property is high priority level. हाई प्रायोरिटी लेवल क्यों? क्योंकि ये प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, तो इसमें प्रायोरिटी लेवल बहुत हाई होता है. सेकंड, वी कैन चेंज द कैरेक्टरिस्टिक्स, सो द कैरेक्टरिस्टिक कैन बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इन इट. आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सकते हो. किसकी? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की, चाहे सिलिकॉन और जर्मेनियम, यू कैन चेंज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एज पर द रिक्वायरमेंट. और वो कैसे चेंज करेंगे? मैंने अभी बोला था डोपिंग, कि कुछ इम्प्योरिटी हम ऐड कर देंगे. दैट इज योर सेकंड प्रॉपर्टी. यू कैन नोट डाउन द की पॉइंट्स हियर. थर्ड वन इज characteristic can be changed by the application of light, heat, that is radiations. With the help of radiations भी हम इसकी characteristics को change कर सकते हैं. And most suitable for heat sensitive and light sensitive devices. ये जो आपके semiconductor materials हैं, heat sensitive, light sensitive devices के लिए most suitable है. जैसे हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर बनाना है, आप ट्रांजिस्टर में यूज करते हो, पीएन डिवाइस, डायोड. क्लियर है? Zener diode. After this, next one is 2 marks question or 5 marks question, ionization. Yes, any one of you.
अगर आपने ये सुना, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन? यस मैम। हाँ जी, मैम आयनाइजेशन होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक एटम में से, उसे कहते हैं आयनाइजेशन। ओके। सपोज हमने एक इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, व्हाट विल हैपन? मैं अगेन सिलिकॉन का बना रही हूँ। दिस वन इज योर न्यूक्लियस, 3 ऑर्बिट्स, 3 शेल्स आर देयर इन सिलिकॉन, जो सबसे यहाँ पे 2, देन 8 एंड लास्ट आउटर मोस्ट में 4, यही होता है। इट्स 14, atomic number for silicon is 14. Yes, ma'am. Okay. अब हमने आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर दिया, रिमूव कर दिया, व्हाट विल हैपन? ये देखो, इस आउटर मोस्ट शेल में वेट 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4, इसमें से मैंने 1 एक्सट्रैक्ट कर दिया, दिस वन रिमूव कर दिया, व्हाट विल हैपन? द ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, हाँ जी, यस विशाल, चार्ज प्रोड्यूस होगा ऊपर। charge producer. Okay. If an electron is removed or extracted from the outermost shell of an atom, हमने एक इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर दिया, मैंने बोला ये वाला मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया, रिमूव कर लिया, व्हाट विल हैपन? देन द ओवरऑल नेगेटिव चार्ज ऑफ दैट आइटम डिक्रीजेस। पहले 4 थे इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज ज्यादा था, अब मैंने एक रिमूव कर दिया, हाउ मेनी लेफ्ट? 3। यस, Yes, ma'am. यस 3 रह गए। तो ओवरऑल जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ऐसे ही मैं अगर और निकाल लूं, एक और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा एज इट लूजेस नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में नेगेटिव चार्ज लूज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन सेम। बट जो आपके प्रोटॉन्स हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो तो सेम रहेगा। अगर आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में, तो 4 प्रोटॉन्स भी हैं। We have already studied about the structure of an atom. The number of protons and electrons will remain same. तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स कम किए बट प्रोटॉन तो ज्यादा ही रहे, आपके सेम ही रहे, that means overall positive charge remains same. Yes. Yes, ma'am. Rest. Yes, ma'am. Okay. So Yes. what will happen here? Atom as a whole loses its electrical neutral nature and becomes positively charged. अब क्या होएगा? जो आपका एटम है वो न्यूट्रली चार्ज आपका जो है वो लूज कर देगा, वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव आयन। एंड वाइस वर्सा, अगर सिमिलरली मैं बोलूं कि अब आपके एटम में से हमने एक एडिशनल एनर्जी गेन करी, जब गेन्स एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। पहले हमने रिमूव करा था, अब मैं कह रही हूँ कि गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो आपका नेगेटिव चार्ज बढ़ना स्टार्ट हो गया। आई एम राइट स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. First step is we are extracting an electron from the outermost shell, और we losing कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे थे। अब मैं कह रही हूँ कि गेन कर रहे हैं, एडिशनल एनर्जी की हेल्प से एडिशनल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। दैट मीन्स इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड एंड दैट टाइप इज कॉल्ड एज नेगेटिव आयन। उसको हम बोलेंगे नेगेटिव आयन। जब हम लूज कर रहे थे, प्रोटॉन्स ज्यादा रह रहे थे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो उसे बोलते थे पॉजिटिव आयन। अगर इन दोनों को मिक्स करें, what is this? The process of losing or gaining an electron which converts electrically neutral atom to a charged ion, that is called as ionization. Is that clear? Yes, ma'am. So the process of losing, कि आप चाहे इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हो, चाहे उसमें ऐड कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं एडिशनल इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहा है? That converts your electrically neutral atom to a charged.
जब आप लूज कर रहे थे तब आपका पॉजिटिव आयन बन रहा था, जब हम गेन कर रहे हैं तब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ionization. You can note down this definition of ionization. If any question is there, then tell me. Yes. Any doubt? I'm waiting for your response, friends. No, ma'am. Okay. Aji, curly note down आपने definition? Yes. No, ma'am. Please No, note. ma'am. Okay. You can also take a screenshot of this. Please respond once done. जब note down कर लोगे बोल देना, ठीक है? Done, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now next one is here. ये इसके अंदर ही note down कर लेना. Electron volt, that is a unit of energy. Please now unit of energy. All of you know what is the charge of an electron? Yes. Charge Yes, of an ma'am, electron की negative. value कितनी होती है? That is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Please note down. तो 1 electron volt की definition क्या है? 1 electron volt. Yes. Please note down the definition. 1 electron volt. 1 electron volt is defined as the energy required by an electron to fall energy required by an electron to fall through a potential of 1 volt, through a potential of 1 volt. और वो वैल्यू कितनी होगी? That is 1.6 into, yes, Simranjit, any question? Ma'am, fall. Okay, I will repeat. Please note down. Energy required by an electron to fall through a potential of 1 volt. Voltage की बात कर रहे हैं, volt. Done? And what is the formula? That is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb into 1 volt. So it's the definition of electron volt is that is a unit of energy required by an electron to fall through a potential of 1 volt. Potential means voltage की बात कर रहे हैं, 1 volt, and that is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 joule in terms of joule. That is 1.6 into 10 raised to power minus 19. Please note down this definition. I'm writing here the definition. It's visible. Yes, ma'am. Please note down.
Now done? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Have you noted this? Okay. So this is all about group 4 material. Now here we have two types of group material. One is in semiconductor materials, one is silicon and second one is germanium. Please now note down the question. Why silicon is most widely used as compared to germanium? सिलिकॉन मटेरियल को हम ज्यादा वाइडली यूज क्यों करते हैं? Why silicon is most widely used? Have you noted the question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done, students? Yes, ma'am. Okay.